Good morning, dear students. So, today we will start up with our next new chapter, that is metals and non-metals. As you all know that till now we have 118 different chemical elements. These elements combine to form a large number of compounds, though there are certain similarities as well as differences in the properties of these elements. And on the basis of these properties, इन elements को हमने divide किया है दो groups में, that is metals and non-metals. ये जो दोनों metals और non-metals है, they are used in our daily life. हम day to day life में इसको use करते हैं. We use a large number of compounds of metals and non-metals. Before I proceed ahead and discuss about this chapter in detail, I would like to tell you what are these three terms. Look at here. It's malleable, ductile, brittle. Let me explain you these three terms first. First of all, we will take up with malleable. What is malleable? Malleable means which can be beaten with a hammer to form a thin sheets without breaking. And ductile means which can be stretched or drawn to form a thin wire. Now coming to the brittle, it means which breaks into a pieces on hammering or stretching. Now keeping these points in mind, we will now define what are metals and what are non-metals, though they are an important part in our day-to-day life. First of all, we will read about metals. Metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile. Okay, so there are certain examples of metals, that is iron, copper, gold, zinc, silver, potassium, calcium, etc. etc. Except mercury, which is a liquid metal. So during a chemical reaction, metals can form positive ions by losing electrons. But the most important metal in the earth crust, that is aluminum, which is 7%. And then afterwards it comes iron, which is 4%. Now coming to the non-metals, these are also the elements, but they do not conduct heat and electricity and are neither malleable nor ductile. They are just brittle. For example, we have certain examples, likewise we have sulfur, phosphorus, oxygen, carbon, etc. हमारे पास टोटल 22 नॉन मेटल्स है, जिसमें 10 जो है नॉन मेटल्स वो सॉलिड है, 1 नॉन मेटल इज लिक्विड एंड 11 नॉन मेटल्स आर गैसेस. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ये मेटल्स हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है इन मेटल्स में. सबसे पहले आप देख रहे हो मेटल्स जो है वो मैलेबल है. रिमेंबर दिस मैलेबल. तो क्या है, metals are malleable, that is they can be beaten into thin sheets with a hammer without breaking. For example, अगर हम लेंगे एल्युमिनियम मेटल और उसको हम ब्लॉक ऑफ आयरन पे रखेंगे, उसके बाद आप उसको बीट करोगे विद हैमर 4 to 5 टाइम, तो आप क्या नोटिस करोगे, वहां पे जो पीसेस ऑफ एल्युमिनियम मेटल है दैट विल टर्न इनटू थिन एल्युमिनियम शीट विदाउट ब्रेकिंग. दैट मीन्स आप कह सकते हो कि जो ये एल्युमिनियम मेटल है ये मैलेबल है. क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की जो एलो करती है उस मेटल को टू बी हैमर्ड इनटू द थिन शीट्स, उसे आप मैलिएबिलिटी बोलते हो. बहुत सारे मेटल जो है वो मैलेबल है. फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है. आप देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे आयरन नेल है, कोल पीसेस है, पेंसिल लेड है या अल्यूमिनियम वायर है. अगर हम इन चारों को हैमर से बीट करेंगे, व्हाट विल वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो आयरन नेल है वो क्या हो जाएगा, वो फ्लैटन हो जाएगा. वैसे ही अल्यूमिनियम वायर भी फ्लैटन हो जाएगी. बट जो पेंसिल लेड है और कोल पीसेस है दैट विल ब्रेक अप इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस. सेकेंड प्रॉपर्टी जो मेटल की है वो है डक्टाइल. दैट मीन जो ये मेटल्स होते हैं ये डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल मीन्स, इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया, डक्टाइल मीन्स metal that can be drawn or stretched into thin wires. For example, copper है, aluminum metal है, ये ductile है and can be drawn into thin copper wires and aluminum wires, which are used as a electric wires. Metals जो है they are good conductor of heat as well as a good conductor of electricity. अब मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी है कि ये लश्रस होते हैं. लश्रस मीन शाइनी, एक डिफरेंट चमक इनमें होती है. जिस इसका मतलब है आई वांट टू से यू दैट दे हैव अ शाइनी सरफेस. फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये शाइनी मेटल्स है एंड दे कैन बी पॉलिश्ड. दैट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल ऑफ हैविंग अ शाइनी सरफेस दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक लस्टर, चमक. मेटल्स जो है ये हार्ड है एक्सेप्ट सोडियम एंड फास्फोरस जो कि सॉफ्ट मेटल्स है. दैट मीन्स इनको हम इजिली कट कर सकते हैं नाइफ के साथ. लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मेटल्स है ये सोनोरस है. सोनोरस मीन्स वो प्रॉपर्टी मेटल की
जिससे हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दैट मीन्स केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डीप और रिंगिंग साउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सस्पेंड करोगे कोई भी बड़ा पीस ऑफ मेटल और उसको स्ट्राइक करोगे किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के साथ, व्हाट विल यू नोटिस? आप देखोगे कि दैट इट विल स्टार्ट रिंगिंग। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफ बीइंग sonorous is called as sonority or sonoresness, and it is due to the property of sonoresness or sonority that metals are used for making bells, wires या musical instrument, जैसे कि हमारे पास स्टार है, वायलिन है। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर हैज अ रेडिश ब्राउन कलर, वेयर एज गोल्ड हैज अ येलो कलर।